हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज से मैं आपको सारे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का मोस्ट सजेस्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ। यूनिट 1 6 सेमेस्टर पास एंड ऑनर्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस मीनिंग। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 ए आंसर, देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ फंड्स इनटू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न। फुल स्टॉप। इट सिंपली असिस्ट द फर्म्स इन selecting the right type of assets for developing their funds. The decisions are taken by the investor or top level managers who properly analyze each opportunity before investing any fund into them. आंसर बी देखिए, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फिनांस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ए डिसीजन मेड बाय द इन्वेस्टर कंसर्निंग द अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन द वेरियस इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स. एन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज a set of guidelines required to create the portfolio and sequence of actions involved, from defining the risk parameters to asset allocations. It is the process that makes an investor a confident investor that can make decisions effortlessly without any self-doubt. Investment decision process involves the following steps. देखिए कौन से steps हैं. Number 1, understanding the client. The first and the foremost step of investment decision process is to understand the client or the investor, his or her needs, his risk-taking capacity and his tax status. After getting an insight of the goals and restraints of the client, it is important to set a benchmark for the client's portfolio management process, which will help in evaluating the performance and check whether the client's objectives are achieved. Step 2 देखिए, assets allocation decision. This step involves decisions on how to allocate the investment process different asset classes, that is fixed income, securities, equity, real estate, etc. It is also the decisions of whether to invest in domestic assets or in foreign assets. The investor will make this decision after considering the macroeconomic conditions and overall market status. तीसरा देखिए, स्टेप 3, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी सिलेक्शन. This third step in the investment decision process is to select the proper strategy of portfolio creation. Choosing the right strategy for portfolio creation is very important as it forms the basis of selecting the assets that will be added in the portfolio management process. The strategy that conforms to the investment policies and investment objectives should be selected. Portfolio strategy may be of the two types, such as active management and passive management. Step 4 देखिए, asset selection decision. The investor needs to select the assets to be placed in the portfolio management process in the fourth step. Within each asset class, there are different sub-asset classes. For example, in equity, which stock should be chosen. Within the fixed income class, so which bond should be chosen. Also, the investment objectives should conform to the investment policies, because otherwise the main purpose of investment decision process would become meaningless. Last step देखिए, step 5, evaluating portfolio performance. This is the final step in the investment process which evaluates the portfolio management performance. This is an important step as it measures the performance of the investment with respect to the benchmark in both the absolute and relative term. The investor would determine whether his objectives are being achieved or not. Full stop. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस विद द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वाटर कमोडिटीज, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल एसेट्स. ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ.